Okay, let's see if everything is working. I hope everything should be working. Okay, so look at this thing. होप एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ दूसरे यूट्यूब प्रोफाइल से. आज हम लोग डेवलपमेंट करेंगे. ये रिस्पॉन्ड टू ईमेल नहीं चाहिए. दूसरा switch accounts, this one. Okay, so yeah, everything is working fine. Cool. Switch accounts, this one. I need to check a couple of things. Should check on this side. Okay. Okay, let me check my OBS. Where is my OBS? Okay, here is my OBS. Video control panels, docs, chats here. Close. Okay, so now I can see the chat at the same time. Yeah, perfect. इसका क्या आ गया? Okay, let's test the chat is working or not. Hey. Great. Now what we will do, okay, so we'll discuss the project first. We'll get the project and we'll jump to the project. We'll
create a notion, and then we'll start the project. Ta-da-da. Notion, this is my notion. So the new project is coming from John Beverly. Okay, this is the guy, and the project is like this project is of 250 USD. So what we will do, hey, I need this whole thing. Just remove the screening questions and paste everything here. Okay, so yeah, now I will know. And second thing he gave us was so yeah, so yeah, perfect. Now this is our project. Just name the I can just keep the whole thing. Yeah, so we'll be creating this thing on n8n. If needed, is my camera okay? So now I'm in center. Okay, so if needed, what we'll do, let's fix this something like this, and okay, now I'm more in center. So let's go to n8n. This is our n8n. We'll create a new start new workflow, and then go to the project description again. Notion, looking for experience in it, and blah blah blah. So just remove this thing. n8n Microsoft Outlook developer tool, simple, stable, reusable. This is the important thing. He needs everything reusable. So what we will do, we'll create it as a something like reusable. Okay, name it like Outlook Manager. Actually, this project is going to be Outlook Manager. He already have a Gmail Manager, so this is how this project is going to be, Outlook Manager. Okay. Need to do one thing. I have to share this analytics. I have to content live. I need to share this. Copy, get share a link. Okay, so yeah, now I share the link with the client as well, so even he can see what I'm doing. So yeah, we need basically n8n Microsoft Outlook 365 developer. He need basically reusable automation that he can for myself and for future clients. Okay, this is version 1 of commercial projects, so focus is on this reliability, simplicity, and clean configuration. Yeah. These days, the one of the thing is like we think we got the access of
chat GPT and all, but even clients got access of all those things. No edge case complexity. Yeah, we have AG replication for new client. Yeah, so basically the plan is going to be uh, uh, basically he is gonna resell all those things, so we will have to keep this thing in mind. Someone joined. Hey Shraddha, how are you? So yeah, so this is version 1 of a commercial projects product, so the for easy implication, and the assistant should automatically trigger the inbox. Okay, so now whole project start from here, मतलब यहाँ से सारा project actually में start होता है, ठीक है? So तो ठीक है. A second option enhancement a second option is lightweight web chat style interface. Okay, this is this is out of the this is out of on this project. Assistant trigger inbox generate draft replies, never send automatically. Okay, basically it is something like read a message and then send a message. This is the, I guess the whole project is something right now. Now scope, project scope version on start edition, that automatically it will run inside n8n. Perfect, it will run inside n8n. And connect Outlook 365 using Graph API. Okay, or official notes. He wants to connect using 365 using Graph API. To be honest, this is the first time even I am gonna try how to connect 365 Outlook 365. Okay. The automation will run fully inside inbox. Simple rules on a schedule. Every 5 minutes fetches new unprocessed move newsletters promotion email to designated folder using simple rule pattern. पता नहीं ये ऑलरेडी हर कोई ईमेल प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है ऑलरेडी, एंड स्टिल ही इज़ लुकिंग फॉर दिस कि न्यूज़लेटर प्रमोशन को सेपरेट फोल्डर में करना. ठीक है, तो हम लोग जब n8n पे बनाएंगे तो फिर ये ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ये चीज़ें ऑलरेडी होता है, बट फिर भी ये चीज़ बहुत ईजी है. ठीक है, एक ये काम है, तो हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें टास्क कौन कौन से है. तो एक ये है, एक टास्क तो ये मुझे फिगर आउट हो रहा है कि ठीक है, तो इसको मैं एक कोई कलर से मार्क कर देता हूँ. ठीक है, एंड उसके बाद इसने ये कहा था कि ऑन स्केड्यूल फेच न्यू कनेक्ट आउटलुक. ओके, keep configuration fully editable, folder names and filtering keywords. Okay, this part he want to keep editable. Okay, cool. So we'll keep this thing in mind. And yeah, for remaining call OpenAI simple, he is using basically open router, sorry, call OpenAI or similar LLM. So we return JSON fields. Okay, needs reply priority summary type or something. Okay, needs reply. पता नहीं इतना बड़ा क्यों है.
प्रिफर्ड फ्रीलांसर स्किल्स, ये तो अपन को ये तो हटा ही दो. Acceptance criteria, okay, this is important. I need multivitamins and I use the secret multivitamin, so okay, now back to our topic. Acceptance criteria, successfully process new email without loops. ठीक है, बेसिकली हम लोग वेब हुक या कोई ट्रिगर एक्चुअली में ऐड करने वाले हैं इस चीज़ के लिए कि जब भी न्यू ईमेल आया समथिंग, ओके, filters category and draft reliably, summary email is clear, correct and send at configured time. ओके, इस चीज़ को अपन स्लैक पे भी कर सकते हैं, लाइक send summary email is clear, correct and sent at the configured time. Send where config changes require no workflow rewriting, obviously can be cloned new with new outlook credential and new config block. ठीक है, और उसके बाद completed deliverables. ओके, आज दिन भर में ये ख़त्म करना है, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट ये है. एक सेकेंड नहीं लगा इसे पॉपअप आने में. ठीक है, do not include the main statement, quote it separately. ये इसको तो पहले हटाओ, ये तो पार्ट का है ही नहीं. Shraddha replied, hey. Okay, so yeah, no hard-coded values, no non-functional requirement, must be stable and fail gracefully, must not reprocess the same email, must maintain this is okay. These are something that we don't need. We need this thing, this thing, this thing. मैं सोच पा रहा हूँ. अब ऑब्वियसली मैं चैट जीपीटी को दे दूंगा, ये सारा रिक्वायरमेंट बना के दे देगा मुझे आउटपुट, बट मुझे तो प्रोसेस करना है ना कि आर्किटेक्चर कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि चैट जीपीटी भी जब पूछेगा तो मैं कैसे बताऊंगा. ओके, कभी कभी तो मुझे लगता है कि चुपचाप दे ही देना चाहिए. एंड दिस वाज
ओके, मैं चैट जीपीटी को ही बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता हूँ चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। विल गो टू चैट जीपीटी। इतने सारे व्हाट्सएप भी खोल रखे हैं हमने। जे किधर है, इसको कट कर दो तो फिर तो इसको भी कट ही करते हैं फिलहाल। ये तो इधर खुला हुआ है, इसको एंड चैट जीपीटी पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे है, यूट्यूब को कट करो, चैट जीपीटी पे चलो, ये n8n है चैट जीपीटी पे। एंड देन विल गेट टू नो चैट जीपीटी क्या कर पाता है। नोशन का इनपुट देंगे, n8n माइक्रोसॉफ्ट ब्ला 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 ब्ला। एज आई सेड दिस इज $250 प्रोजेक्ट, सो इसलिए हमें एक दिन में करना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीम पे पता नहीं डेवलपर ऐसे करते हैं कि नहीं करते, बट एज मी पता नहीं, लाइव स्ट्रीम है ना। चलो कंट्रोल सी, चैट जीपीटी भाई साहब create a perfect soup, or I would say super perfect super perfect requirement that I can feed to my n8n feed to CL to generate the n8n. ओके, मैंने सब कुछ n8n को दे दिया। अब n8n बेसिकली इसको प्रोसेस करेगा, और n8n प्रोसेस करने के बाद बेसिकली n8n को दे दिया। n8n प्रोसेस करने के बाद मुझे ये बता देगा कि कौन सा जेसन, मतलब ये बेसिकली मैं क्लाउडे को एक प्रॉम्प्ट है जो मैं इसको दूंगा, और ये सारा प्रॉम्प्ट मैं क्लाउडे को दूंगा, और क्लाउडे इसको पूरा प्रोसेस करेगा। एंड आई डोंट नो सो मैं इसको बोलूँगा hey, I don't know which one is great, but I would say go with Microsoft official credential instead of graph calls. I have no idea like whether they work or they don't work. I have never used it, so yeah, plan accordingly.
Hey, I don't know. I have never used this thing. What called uh, Microsoft 365 or Graph. I have not used both of them, so you can use whatever you want. To be honest, you can use. Let's say if official credential is perfect, so go with official credential instead of Graph, because I don't have idea any of them. So yeah. Absolutely, no worries at all. We'll keep it nice and straightforward. Basically, we can just lean on the official Microsoft 365 nodes that n8n already provides. That means you won't have to stress about anything fancy like the Graph API, just good old out-of-the-docs nodes to keep things simple and easy. So the prompt will just make sure Claude sets everything up using those official nodes. Basically, it's like telling Claude, hey, stick to the easy lane and just use the built-in Outlook 365 credentials node. That way it's all super plug and play for you. We'll keep the rest of the magic exactly the same. One neat config block, easy client replication. This guy speaks a lot. She wants zoom करो, but what? क्या zoom में मैं क्या करूँ? Like, do you want to zoom this section? Like, I think it is quite easily visible. Or you want to zoom what? This section, but I have not even started working on this part. So कौन सा part zoom करना है? Okay. Paste this requirement. I prefer anything. Okay, so you are an expert in read carefully deliverables. Okay, if needs reply true, yes. Architecture. Okay. श्रद्धा जूम करना है, क्या जूम करना है एक बार बता दो यार. Minimal. No. Everything. Don't ask me question. Let me go to Perplexity. Why I'm using Perplexity? Because it is free. So I'm using Cloud's Sonnet 4. पता नहीं anti-gravity will work for this or not. I don't know. But this Opus 4.5, let me check. Anti-gravity has access to Opus 4.5 or not. लाइक अगर इसके पास Opus 4.5 का एक्सेस होगा तो अपन उसको भी यूज कर सकते हैं. नहीं होगा तो फिर है तो Opus 4.5 का ऑप्शन. चलो फिलहाल मैं इसी को बोलता हूँ. चलो यार स्टार्ट हो जाओ. मैं एक बार इसको भी दे देता हूँ. दोनों में से कौन परफेक्ट है? ये तो लेगा नहीं, सोनेट ही लेगा. चलो
ओके गो, लेट्स सी हाउ बोथ ऑफ देम वर्क. इसने तो क्या क्या ना दिया, वर्क फ्लो, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, ट्रिगरेज. प्रॉम्प्ट्स तो इसने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, बट ये फ़िलहाल बना रहा, देखते हैं. नहीं, नोटिफिकेशन तो नहीं चाहिए. सो ये एक प्रॉम्प्ट तो मुझे मिल गया. एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. You are professional email assistant generator concise keep 2 3. ओके, वर्क फ्लो जनरेट होने दो, टाइम लेगा. बस ये बंद ना हो जाए. टारा 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 टा. दूसरा प्रॉम्प्ट ई बन गया, वर्क फ्लो बन गया. आज मुझे डे एंड तक इसको ख़त्म करना है. फिर डे एंड पे मुझे काफ़ी, हाँ, टू बी ऑनेस्ट इसको कल ही ख़त्म होना चाहिए था कल, बट मैं बाल कटाने के चक्कर में दिन भर बाल कटाने में लगा दिया, सच बताऊँ तो. लेट्स सी. ओके, ओके, टेक्निकल नोट्स, बेस्ट प्रैक्टिस. सो ये कौन सा नोड है, वर्क फ्लो डी. ओके, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट. क्या आउटपुट आया, देखो क्या आउटपुट आया. एक ऐसा आउटपुट आया जिसका कोई लेना देना भी नहीं है. एंड अगर हम नो नीड्स रिस्पेक्ट, बट हमें आइडिया एटलीस्ट लग गया कि होता क्या है. ठीक है, गेट हाई प्रायोरिटी मीन्स एवरेज. बट देखो ये आउटपुट कैसा है. ये ये तो हिट कर गया, 2 मिनट लगे इसे हिट कर गया. बट अगर मैं एंटी ग्रेविटी से ही चालू करूँ, न्यू विंडो, इसको कट करो. ठीक है, अननेसेसरी पता नहीं. इसको मैं थोड़ा सा दूर रखता हूँ, किसी काम का नहीं है. तो अगर मैं कोड में चलते हैं ऐसे ही, मैं पता नहीं, अगर ये एंटी ग्रेविटी पे वर्क कर गया तो तब तो बहुत अच्छा बात है. नहीं करा तो तब तो नो यूज़. n8n वर्क फ्लोज.
n8n वर्कफ्लो डेवलपमेंट यूजिंग पता नहीं, अगर ये काम कर गया तो सही है। ठीक है, सेम प्रॉम्प्ट मैं इसको देने वाला हूँ, जो प्रॉम्प्ट इसको, जो प्रॉम्प्ट मैंने सबको दिया है। ओके, इंटीग्रिटी, वेयर इज इंटीग्रिटी, ये रहा। एक बार में इतना सारा, ठीक है। नाउ भाई साहब प्रोसेस इट, ये भाई साहब अपना काम करेंगे इधर और अपन करेंगे इधर, ठीक है। तो हमने देखा कि जो वो अपना वर्कफ्लो डी है उसको मैंने कॉपी पेस्ट करा तो एकदम टूटा फूटा सा है। क्रिस के साथ मीटिंग भी थी बट क्रिस ने तो रिप्लाई ही नहीं करा। अच्छा, क्रिस ने रिप्लाई ही नहीं करा, ठीक है, मुझे क्या लेना देना। क्रिस ने रिप्लाई नहीं करा तो क्रिस की गलती, ये वर्कफ्लो डी है और ये प्रॉब्लम, ओके। वर्कफ्लो सी को अगर कॉपी, प्रॉब्लम इंपोर्टिंग वर्कफ्लो, जस्टिन कहीं मिला, जस्टिन से बात हुई क्या? जस्टिन, पता नहीं इससे पहले कोई बात तो नहीं हुई जस्टिन। ठीक है, एक मिनट। बट इसके लिए पक्का इवनिंग होगा, एक तो ये ना काम भी सीज नहीं करना, वट एवर। तो थर्ड नोट तो कॉपी भी नहीं हुआ, चलो। पता नहीं इसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। ओके, ये रहा वर्कफ्लो ए, ठीक है। अगर इसको पेस्ट कर, वाओ, दिस इज द, अभी इसका, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये वर्कफ्लो ए है, पता नहीं। ये वर्कफ्लो ए इंटीग्रिटी क्या कर रहा है, इंटीग्रिटी बना रहा है, ठीक है। वर्कफ्लो ए है जो कि देखने में तो बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है, इसको कनेक्ट करने के बाद चीज़ें और सही लगेगा। ठीक है, ये वर्कफ्लो बी है, ठीक
ओके ओके वर्कफ्लो बी इज स्मॉल, तो अपन एड स्टिकी नोट, इसको तो वर्कफ्लो बी बनाते हैं, ठीक है। जॉन ने वापस रिप्लाई नहीं करा। ओके मैं एक बार इस बंधु को मैसेज कर देता हूँ कि जॉन भाई जस्टिन Justin is good. Be responsive. About the client 8 job posted. मैंने इसको एक मैसेज भी दे देता हूँ। ये भी मैंने कर दिया और मैंने बता दिया मिड मॉर्निंग। let's say if इसका मतलब है कि ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको मैं भी फ़िलहाल कट करता हूँ। तो ये हो गया अपना वर्क फ्लो बी। तो जो हम बना रहे थे ईमेल असिस्टेंट, उसका ये वर्क फ्लो बी हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला वर्क फ्लो ए हो गया। अरे यार अभी वर्क फ्लो ए तो है बट पहले ये देखते हैं ये कौन सा इंस्टॉल दिस नोट इज करेंट फेच एंड रीड कस्टम नोड, ऐसा कौन सा नोड है। दिस नोड इज करेंटली नॉट इंस्टॉल। ओके नोड का नाम तो बताओ, हम अभी इंस्टॉल कर देते हैं। ओके ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आउटलुक है क्या? परफेक्ट। ही scheduled a meeting, so now अब चेक करना पड़ेगा उसने मीटिंग कब स्केड्यूल करी। वैसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। मीटिंग स्केड्यूल करी है 14 दिसंबर, आज है 13 दिसंबर। 14 दिसंबर 10:30 से 11 बजे दिन के टाइम, ठीक है, अच्छा है, परफेक्ट। ओके परफेक्ट, इसको कट करो। आउटलुक, सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये तो काम कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये भी काम कर रहा, दोनों काम कर रहे हैं। तो फिर इसने कौन सा ऐसा टूल मंगाया जो इनके पास है ही नहीं। अप्लाई कैटेगरी पता नहीं, चलो एक बार इसका भी देख लेते हैं। अगर ये काम कर गया ना एंटी ग्रेविटी को, तो मैं तो प्राइस दूंगा, प्राइस। ओह वाह परफेक्ट, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना सुंदर होगा।
वाह, फिर लोग बोलते हैं कि वाई दे डू नीड इंजीनियर्स. यस सर, यस. वन स्टेप रिक्वायर्ड. कौन? वन स्टेप रिक्वायर्ड एक्सपेंड. रन कमांड, रन क्यों करना है भाई? गेट कंटेंट सीन होने क्यों करना है? नहीं करना है. मेरा जो क्लाइंट है ना, वो उसको देख के पागल हो जाएगा. अगर उसने गलती से वीडियो देख लिया ना, वो तब पागल हो जाएगा. लाइक यूज चैट जीपीटी, एआई टूल्स फॉर दिस डेवलपमेंट. यार तो एआई टूल्स यूज करना पड़ता है सर, तभी आप अच्छा डेवलप कर पाओगे. मैं दिमाग खपाऊंगा तो 6 घंटे लग जाएंगे. पागल, इतना भी नहीं समझता. लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई. मुझे सच बताऊं, पर्सनली ये लगता है कि जिस हिसाब से एआई टूल्स डेवलप हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए. क्योंकि कल तक n8n एक जॉब क्रिएट करता था, और आज n8n अपने आप में चैट जीपीटी से बनना पूरा वर्क फ्लो. ऑब्वियसली चैट जीपीटी ने नहीं बनाया, एंटी ने बनाया. ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बस इन सबको ऑन करना है. तो ये हो गया अपना आउटलुक मैनेजर. अभी मैं ना, चलो मैं इसका फोल्डर का नाम रखेंगे आउटलुक मैनेजर. ग्रेट. आउटलुक मैनेजर पे जाएंगे, जहाँ पे तो कुछ है नहीं, पर्सनल में जाएंगे. इस आउटलुक मैनेजर को खींच के ऊपर लाएंगे, खींच के. अरे यार आजा मेरे भाई, आ गया. अब इस आउटलुक मैनेजर के अंदर जाएंगे और मुझे मिल जाएगा एक अच्छा सा आउटलुक मैनेजर. ओके, परफेक्ट. तो ये रहा. इस आउटलुक मैनेजर का नाम रख देंगे वर्क फ्लो ए. ओके, ये वर्क फ्लो बी डिलीट. ये इधर आ गया. चलो अब एक वर्क फ्लो बी बनाएंगे. इसका नाम रखेंगे वर्क फ्लो बी. ठीक है. अरे यार, परफेक्ट. अब चूंकि अपन को पता है कि ये सब नाकारा है, ओनली चैट जीपीटी वर्क ग्रेट एंड देन एंटी, तो वर्क फ्लो बी एक्सेप्ट. और से वर्क फ्लो बी सिंपल. ये जो अब बनाएंगे वर्क फ्लो सी. ऑब्वियसली वर्क फ्लो सी डन, पेस्ट. सो एनालाइज फॉर्म वेबबुक टू वेबबुक. ओके, पता नहीं. गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेबबुक. सच बताऊँ तो अभी तक तो मुझे बहुत चीज़ पता भी नहीं चला कि मैं बना क्या रहा हूँ. बस मुझे ये पता है कि आज डिलीवर करना है. टाइम कितना? 8:56. सुबह 8 बजे आया. ठीक है.
Oh, whatever. Now it looks more perfect. So yeah. Okay. We can choose a model. Okay. Why? From list. ठीक है, इसके पास नहीं है, इसके पास तो होगा. Done. 4O. GPT-4o टू बी ऑनेस्ट मेरा फेवरेट है. लाइक हर काम के लिए मैं उसे ही डाल देता हूँ. लाइक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि देयर शुड बी ए रीजन लाइक व्हाई वी आर गोइंग 4o, बट मैं हर चीज़ में 4o डाल दो यार. टेक्स्ट 4o. ठीक है, यहाँ से ओपन आउटर को हटा दूँ एंड गो विथ ओपन योर अकाउंट. सेम 4o. भाई साहब मैं ना निक सरीव्स का, मैं लिटरली मैं बिलीव नहीं कर पाऊँगा. मैं निक सरीव का कमेंट देख रहा हूँ. माई ही इज जेम. लाइक मैं उसको फॉलो करता हूँ. यू गॉट दिस मैन. भाई आई एम नॉट किडिंग. हे निक, बिग फैन. वियर्ड वियर्ड ऑफ द वियर्ड थिंग. इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. Okay, we have to choose 4o. Great things happens. At least he knew I exist. 4o. 4o आ क्यों नहीं रहा है? Whatever, ये ऐसे ही है. Oh, इससे अच्छा सुबह क्या हो सकता है? अभी तक तो मैंने क्रेडेंशियल्स भी नहीं बनाया टू बी ऑनेस्ट, बट या मुझे समझ में आ गया कि इस चीज़ को सेटअप करना पड़ेगा. बट अगर किसी के पास क्लाउड वर्जन है तो, जिसके पास क्लाउड वर्जन है उसको ये सेटअप नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, कोई ना. Now Nick has made my day. So we'll go to next A, B, C. Now we'll create workflow D, create new workflow. मैं हंस क्यों रहा हूँ? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि something very great had happened. Control C. Anyways, paste. Okay. मैं दिन भर निक के वीडियो देखता हूँ एंड देन सीखता हूँ. लाइक आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम दिस गाय एंड देन टुडे okay, skip log. Perfect. See, so moral of the story is I just need to get this thing.
save, and we'll call it workflow D. So we have workflow. So we have workflow A, B, C, and D. Perfect. Cool. Anyways, we'll start from workflow A. As usual, इसे भी वही 4O यहाँ से इसे select करो, go with 4O, let test. So, moral of the story, everything is working except this thing. Okay, now we'll have to get this thing. Now we need to install this thing in our basically for anyone using cloud, you don't need to do this level of setup, okay, when you are doing. So basically it is gonna be pretty easy. I can show you how easy it would be, but for others not using in cloud, if you are using cloud, then yeah, let's say this one, and then yeah, Outlook. So if you'll click, let's say create a contact, so yeah, if you'll create you will just connect my account and then it will happen. So you don't need to do so many things. But in my case, I have to do all these things, okay? Because I'm not using cloud, I'm using my own server. So I have deployed this thing on my own server, okay? If my video can reach to that level of guy, and then it's interesting. It's like, as you said, it's interesting. पहले तो मुझे क्लाइंट आईडी एंड एक्सेस आईडी, ठीक है, इसे लेना, ठीक है, एक्सेस टोकन एंड ऑथराइजेशन ये वाला, क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट लेना, ठीक है, इसको हटा, क्या है, अब मैं ये दोनों कहाँ से लाऊँ, ठीक है. So we'll go to open docs and then we'll create a Microsoft Azure account. Oh. So basically there are multiple ways, like see, मैं ये नहीं बोल रहा, मेरा point था कि like Google or in Google Cloud, whenever we need all the things, so we go to Google console and then we do. So same way now he is also doing, go to Microsoft Cloud and then
I don't think I have any. Explore Microsoft Foundry these days. पता नहीं इतना बूम कर रहा ना. Explore Microsoft Foundry job and all में. साइन इन क्या साइन अप करना पड़ेगा मुझे नहीं लगता कि मेरा अकाउंट एग्जिस्ट भी करता होगा. Okay. Okay, we are updating our terms next. Skip having stay signed in, yes. Sign in failed, try again. Sign in failed, try again. Good. Because get started with it, sure. Pay as you go. $200 credits and pay as you go. Best for customer ready to start building. Best for exploring. अपन ये सिम जा रहे हैं अभी अपन एक्सप्लोर ही कर रहे हैं. Okay. Something is happening. How do you plan to use Azure account? For personal use? Yeah, for personal use. Country, blah 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 blah. Phone. Name. The name is private isn't valid. तो ठीक है खाली रहने दो और क्या. Next. The field is required. Okay, let's make this thing famous then. I understand. Send. Select state. पटना का बिहार में है. Select पटना. PATNA. Okay. Next. Hi Sojwal. Hi. So फिलहाल ये सेटअप हो रहा. पेमेंट इन्फॉर्मेशन एक सेकेंड मुझे ऐड करने दो. पेमेंट इन्फॉर्मेशन
004 एंड मुझे जानना है इस कार्ड का okay, it is 10, it is 12. Okay, perfect. CV वगैरह डाल ही दिया, submit. Let's see how it goes. You won't be charged unless you move to pay as you go. Pay at the bill desk. Zero 3 double 5 3 5 submit. I hope sign up हो गया हो. Next. Yeah. क्या मैं कर रहा हूँ यार, ये बेसिकली हम लोग सेटअप कर रहे हैं. हम लोग क्या सेटअप कर रहे हैं, हम लोग सेटअप कर रहे हैं ये ओम प्रकाश है ना, ये बस हर बार ईमेल करता है वी नीड दिस वी नीड दिस वी नीड दिस. ओके सो फिलहाल तो इस पे मैसेज नहीं है. क्या इस पे मैसेज है? नहीं, रेलवे ने कुछ चेंज लॉक करा. ठीक है, विल सेंड टू वेरीफाई दिस इज इंटरव्यू. ओके, पहले मुझे ईमेल डालना है. ओके परफेक्ट, तो ईमेल तो यही है. क्या चल रहा है? ओके, अब हम लोग फाइनली ये जो के अंदर है एंड ये फिर से बोल रहा है साइन अप फेल्ड. कितना मज़ेदार है कि लाइक सब कुछ हो करके साइन अप फेल्ड बोल रहा है. पहले अपन साइन आउट करेंगे, फिर से साइन इन करेंगे. It's a good idea to close all browser. Okay, signed out. इधर का इजी है ना, तो इसको तो हटा ही दो. लीव लीव इसको फिलहाल क्लोज करो, बैक करो, सेव करो. नाउ विल डू व्हाट, इसको भी क्लोज करो. विल क्लोज ऑल क्रोम. Now I don't have any Chrome.
कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं. बैक टू एज्योर. अबे समथिंग इंक्रीज्ड. अगर हमने एज्योर सर्च करा तो AWS ने इतना पेमेंट ऐसा फूक रहा. ओहो. साइन इन. एरर मैसेज दिस टेनेंट हैज बीन ब्लॉक्ड ड्यू टू इनएक्टिविटी. पता नहीं क्या है इनएक्टिविटी और समथिंग. अभी तो मैं लॉग ही नहीं कर रहा हूँ यार. अभी मैंने साइन अप भी करा है. और ये हमेशा विंडोज़ के एरर जैसा क्यों ब्लू 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 ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं था. ये यहाँ पे दे दिया. Go to Azure status page. Let's see how we can fix it. Hmm. Now I'm going to take rest. मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ. हम लोगों ने बहुत सारा पार्ट कर दिया. बस एक एज्योर को कनेक्ट करना है. ठीक है, मैं वापस आऊँगा 20 मिनट के बाद. फिर से सेशन स्टार्ट करेंगे. अभी एक तरीके से मैं थक चुका हूँ.